Assalamu alaikum. In this video lecture, we will be discussing about verb. So let's start. First of all, we will talk about infinitive. The 2 plus first form of the verb is called as full infinitive, and it is basically used to show the purpose or priority. For example, he stopped to smoke. What was the purpose? He stopped why? What? He stopped to smoke. ठीक है? He hopes to win the match. ये एक और example है. One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. Again, example infinitive किया है. I went on as if it had been prompt to lie about it. As if I have been prompt to lie about it. Again, यहाँ पे जो to lie है, that is infinitive. Then infinitive is basically the base form of the verb used with or without to. ठीक है, the base form of the verb is written with to. So infinitive is the base form or the verb which is used with or without to. If the base form of the verb is written with to, it is called as full infinitive, and if the base form of the verb is written without to, it is called as bare infinitive. Infinitive without to is used with let, had better, causative have plus person, would rather, sooner, modals like need not or dare, etc. and causative make, for example active voice. तो जो bare infinitives होते हैं वो आप इन सब के साथ यूज करते हैं. Watch, see, hear plus noun या pronoun. अब कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास जो कि आप देख सकते हैं. लेट की जो है ना यूजली इस तरह यूज होते हैं. ही लेट द डर्ट रन. नहीं, आपने इसको इस तरह नहीं लिखना, आपने इसको लिखना है ही लेट द डर्ट. देखें ऊपर वाले में टू रन लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे आपको बेर इन्फिनेटिव यूज करना था, तो इसका करेक्ट वर्जन होगा ही लेट द डर्ट रन. ठीक है, जिसके आगे टी लिखा हुआ है. टी मीन्स टू. अगेन हार्ड बेटर को आप कैसे यूज करेंगे? आई हैड बेटर शार्पेंड माई पेंसिल. अगेन यहाँ पर आपको इस तरह करना है कि बेर इन्फिनेटिव यूज करना है, तो शार्प पेन आएगा, शार्पेंड गलत हो जाएगा. देन वुड रादर, आई वुड रादर नॉट डिस्कस्ड इट एनीमोर, तो गलत हो जाएगा. आई वुड रादर नॉट डिस्कस इट एनीमोर जो है ना वो ठीक. Then there is subjunctive mode. It is essential that he goes to the doctor. It is essential that he go to the doctor. ठीक है, तो goes नहीं आएगा बल्कि go आएगा. बेस फॉर्म आपने यूज करनी है. Causative have plus person की एग्जांपल अगर हम देखें तो ये है कि that I always have my children to take the medicine. I always have my children take the medicine. To take नहीं यूज करना बल्कि bare infinitive यूज करना है. Then we have modals. You need not to look for it. You need not look for it. ठीक है, to look की जगह look for it. Then causative make की अगर मैं बात करूँ, I will make them to learn English first. तो इसका करेक्ट वर्जन होगा I will make them learn English first. Then they watch. ठीक है, यहाँ पे see या hear के साथ जब आपके पास noun आता है तो आपने इसको किस तरह से लिखना है? अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे ना, फर्ज करें सी के केस में ही saw me picked up this string here, नहीं, गलत हो जाएगा. आपको bare infinitive यूज करना है, इसका करेक्ट वर्जन होगा he saw me pick up the string here. फर्दर एग्जांपल्स आप कुछ देखें. he let the water run. ठीक है, until it gets warm. इसी तरह we thought you had better look her over. या फिर I'd rather he did not know I was around. या this man felt his hair flutter. ये सारे bare infinitives हैं. And orchestra could be heard playing. ठीक है, infinitive with do. ठीक है, तो अब जो full infinitive होता है ना, infinitive with do, कुछ words होते हैं जो कि अपने साथ हमेशा infinitive लेते हैं. For example, decide. Catherine decided to marry Mr. Chubbs. इसी तरह causative make जो होता है अपने साथ infinitive लेता है. ठीक है, they were made to learn English first. इसी तरह causative verb जो है ना get, वो भी अपने साथ लेता है. I got the gardener to water the plants. To water आपको नजर आ रहा है, ये happen. Then there are stative verbs. Stative verbs like believe, doubt, know, like, love, hate, refer, want, wish, appear, hear, smell, sound, taste, deny, impress, involve, lack, matter, need, possess, consist, compromise, contain, comprise, understand, seem, look, taste, sound, smell, etc. are not really used in the continuous form even when we are talking about the temporary situations or states. ठीक है,
तो ये वो चीज़ें होती है जिनको आप कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट दिस प्रॉब्लम। ठीक है, नो के साथ आपने टू डू ही यूज किया। Verb of knowing. Some verbs such as know, learn, teach, discover, find, etc. take how plus 2 plus V1. For example, he knows playing this game गलत है, he knows how to play this game correct है। इसी तरह my mother has taught me doing it नहीं, my mother has taught me how to do it। लास्ट में आप ये देख लें कि एंटिटीज का क्वेश्चन है shall is considered के साथ आपने जो है ना वो इन्फिनेटिव लगाना है, to plus infinitive to be an idealist word। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट वर्जन है। This is all for today. Thank you so much.